Good morning, everyone. Today I'll explain the literary terms lyric, simile, and metaphor. Lyric. You have heard this term. What is a lyric? Now, a lyric is a short poem expressing the personal mood, feeling, or meditation of a single speaker. You could say any poem is considered as a lyric. Now, it is actually a poem. A lyric is a poem which is intended to be sung within lyre. Lyre is a musical instrument and it expresses speaker's feelings, emotions, and his thought process. Now, if we talk about this term, in ancient Greece, a lyric was a song for accompaniment on the lyre. If you can see in the picture, this instrument is known as a lyre, and any poetry which has musical quality and which has the intention of singing is also known as a lyric poem. Now, lyrics may be composed in almost any meter and on almost every subject, although the most usual emotions presented are those of love and grief. इसके लिए किसी मीटर कोई स्पेसिफिक मीटर नहीं, इसकी कोई भी स्पेसिफिक मीटर की ज़रूरत नहीं होती है लिरिक पोइट्री में. And the most usual common emotions are those of love and grief. Now, this word actually is a Greek term, lyric. ये जो है Greek term है, and it originated from the word lyre. Lyre, I already told you, is a musical instrument, and it was used by ancient Greeks. Now, if we talk about its types, you could say now elegy, ode, sonnet, dramatic monologue. Now they all are types of lyric poetry. एलिजी को, ओड को, ये सब लिरिक्स के ही टाइप्स हैं. एलिजी भी लिरिक पोइट्री होती है, ओड लिरिक पोइट्री होती है, सोनेट को भी हम लिरिक पोइट्री कहते हैं. सो इनके इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, लेकिन ये सभी लिरिक पोइट्री में ही आते हैं. Now, lyricism is the emotional or song like quality, the lyrical property of a lyric poetry. Lyrical property, or you could say the musical property. Now, lyric poems, they have a musical quality and it explores the emotions of the speakers of the poem. And if we talk, now Pindar is considered as one of the famous lyric poets. And if we talk in England, in Elizabethan England, Shakespeare actually popularized lyric poetry in the form of sonnet. Afterwards, in Romantic era, also Wordsworth, Keats, Shelley were the famous poets, the famous lyric poets, and etc. Now, the next literary term is simile. Now, this is the easiest term, and an explicit comparison between two different things, actions, or feelings using the word as a like. Simile comparison होता है कि जहाँ पर भी आपको पोएम में किसी भी लाइन में अगर एज या लाइक ये दोनों वर्ड्स अगर कहीं यूज़ हो रहे हों तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे पोएट ने सिमिली का यूज़ किया है. जैसे कि एग्जाम्पल, आई वंडर्ड, ये डैफोडिल्स पोएम है वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. नाउ द वर्ड्सवर्थ हैज़ क्लियरली यूज द वर्ड एज, एंड यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहा है किसका, खुद का एक क्लाउड से. जो नेक्स्ट लाइन है, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, ये भी पोएम वर्ड्सवर्थ की ही है. द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. यहाँ पे जो कंपैरिजन है, वर्ड आप देखें लाइक यूज़ कर रखा है वर्ड्सवर्थ ने. यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, फ्लावर्स आर लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, यहाँ पे विंड का कंपैरिजन हुआ है फ्लावर्स से. जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, ये जो लाइन है वो शेक्सपियर की ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज इस पोएम से ली गई है.
और यहाँ पे जो कंपैरिजन हुआ है वो एक स्कूल बॉय का हुआ है। स्कूल बॉय को एक स्नेल से कंपेयर किया है शेक्सपियर ने। शेक्सपियर ने बोला है जो स्कूल बॉय होता है, जो नेक्स्ट स्टेज है, जो थर्ड, आई थिंक थर्ड स्टेज है मैन की, जहाँ वो स्कूल बॉय होता है, वो स्कूल जाने में ज़्यादा उसे अच्छा नहीं लगता है, और वो उसकी जो स्पीड होती है वो एक स्नेल की तरह होती है, बहुत ही धीरे स्पीड में वो मूव करता है स्कूल जाने के लिए। नाउ दिस सिमिली, आई थिंक इट्स क्लियर, you could say a very common figure of speech in both prose and verse, and it is more tentative and decorative than metaphor. Now, the next term is metaphor. Now, metaphor is also comparison. Simile and metaphor, they both are, you could say, they both are used for comparing two different things. And the only difference is that in simile, you'll notice the word as and like, whereas in metaphor, you won't find these words. हमें लाइन पढ़ के हमें ही पता लगाना है होगा कि पोएम में लाइन में दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है। Now, metaphor is the most important and widespread figure of speech in which one thing, idea, or action is referred to by a word or expression normally denoting another thing, idea, or action, so as to suggest some common quality shared by the two. Now, in a metaphor, it actually states that one thing is another thing. Like you could say in Shakespeare's, in famous poem, "All the world is a stage," he compares world to a stage. He says that the world is a stage. ठीक है, तो एक चीज को दूसरी चीज से डिनोट किया जाएगा, तो यही कंपैरिजन का बेसिस होगा। Now, the use of metaphor to create new combinations of ideas is a major feature of poetry, and although it's quite possible to write poems, of course, without metaphors. Now, of course, a metaphor compares to unlikely things. Now, if we take some examples, now these all examples are there in your prescribed poems. First one is "All the world is a stage." I think it's clear, वर्ल्ड को एक स्टेज से, एक मंच से कंपेयर किया है शेक्सपियर ने। ये पोएम है शेक्सपियर की सेवन एजेस ऑफ मैन। नाउ द सेकंड एग्जाम्पल, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट बिफोर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। ये एक सोनेट है जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और इसमें जॉन मिल्टन ने व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, अब इस एग्जाम्पल में मिल्टन ने अपनी जो आईसाइट है, जो विजन है, उसको कंपेयर किया है एक किसी भी, यू कुड से, किसी भी लाइट के सोर्स से जो कि अब बुझने वाला हो, या जिसमें जो रोशनी है वो ख़त्म होने वाली है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ही हैज़ कंपेयर्ड हिज vision, his loss of sight. Milton is comparing here his loss of vision to any, you could say, light source which is actually being run out. Now, the second line, before half my days in this dark world and wide. Now, in his darkness, after his loss of sight, now this image, or you could say this his darkness or his blindness, he has compared his blindness with a world which is dark and white. अपनी blindness को उसने एक ऐसे दुनिया से, ऐसे वर्ल्ड से कंपेयर किया है जो कि एकदम डार्क है, जो एक वाइड वर्ल्ड है। आई थिंक इट्स क्लियर द कंपैरिजन, हाउ ही हैड कंपेयर्ड इट। The third example is the sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours. This is "The World is Too Much with Us" by William Wordsworth. Now, here the sea has been compared to a woman who shows her bosom, and in the next line, the winds have been compared with, you could say, wolf, or with the dog that howls. So, winds have been compared with an animal, and the sea has been compared with the women. So, in lines में you could clearly notice कि कंपैरिजन हो रहा है। सिमिली में हमें लाइक एंड एज वर्ड्स दिखने को मिलेंगे, लेकिन मेटाफर में
हमें खुद को पहचानना पड़ेगा कि लाइन में पोएट ने क्या कंपेयर किया है, किन दो चीज़ों को कंपेयर किया है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.